फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 5 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन इन सॉलिडवर्क्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ सॉलिडवर्क्स? देयर आर 3 मोड्स ऑफ सॉलिडवर्क्स: पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। फर्स्ट वन इज पार्ट मोड। द पार्ट mode is the first mode of SolidWorks which a 3D model is created to create any design. You are provided 3 default planes named as front plane, top plane and right plane. Second one is assembly mode. After creating different parts of model in a part mode, next task is to assemble this task to create model. For assembling the parts we need to use this mode. Third one is drawing mode. The drawing mode is used for the documentation of any created part or assembly. All documentation is done in 2D format in this mode. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, what are the modes of SolidWorks? तो सेकंड क्वेश्चन, what are the relations is SolidWorks sketch and how they are used? In SolidWorks, between sketch entities and model geometry, either 2D or 3D sketches are an important means of building in design intent. As we sketch, SolidWorks automatically adds relation, coincident, horizontal, vertical, midpoint, collinear, परपेंडिकुलर, कॉन्सेंट्रिक, टेंजेंट, सिमेट्रिक एटसेट्रा। तो ये था व्हाट आर द रिलेशंस इज सॉलिडवर्क्स स्केच एंड हाउ दे आर यूज्ड। तो थर्ड वन, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड टूल्स इन सॉलिडवर्क्स? सरफेस। फर्स्ट वन इज एक्सट्रूड, सेकंड रिवॉल्व, थर्ड स्वीप, फोर्थ लॉफ्ट, 5 offset, 6th fill surface, 7th extend, 8th trim, 9th untrim, 10 planar and 11th and last one is thicken। ये थे commonly used tools SolidWorks में जो यूज होते हैं सरफेस में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वो है what is convert entities and where it is used? Convert entities are used in SolidWorks to draw sketch with the reference to any feature of part. Open the sketch, click model edge, loop and surface, click convert entities. Fifth and last one is what is hole wizard and how it is used? Hole wizard is the tools inside SolidWorks that allows to quickly creating standard and customized hole with part or assembly without using multiple features। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।